Okay, so it's day 54 and today we'll be solving this cut off trees for golf event. So to make cell दिया है m into n का 0 means the cell can be walked through, cannot be walked through. 1 means there's an empty cell and can be walked through. A number greater than 1 represents a tree in a cell that can be walked through and this number is the tree's height. And तुम्हें क्या बताना है कि starting from the point 0,0 return the minimum steps you need to walk to cut off all the trees. If you cannot cut off all the trees, return a -1. So तुम्हें 0,0 से start करना है and increasing order में you have to cut down all the trees and you have to give the minimum time such that you are able to cut down all the trees. जैसे इस केस में it will take a total of 6 seconds or considering you take like you need a second to go from one cell to another, तो यहाँ पे 6 seconds लगेगा. यहाँ पे you cannot do anything because you will cut down 1 से 2, 2 से 3, but then you cannot go from 3 से 5 because you cannot visit this particular cell. That's why the answer is -1. Constraints छोटे इसके 50 है, m, and 50, so you can apply m into n का होल स्क्वायर वाला लाइक बिगो m n होल स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज़ हल्का सा वेरिएशन ऑफ बी एफ एस. लाइक सो वॉट यूल डू इज़ फर्स्ट यू विल स्टोर समथिंग लाइक एक तुम डेटा स्ट्रक्चर बनाओगे जहाँ पे तुम स्टोर करोगे ट्री का हाइट कॉमा आई कॉमा जे द ट्री का इंडेक्स. सो यू विल कन्वर्ट योर होल जो मैट्रिक्स है ना उसको इस फॉर्मेट में एंड देन व्हाट यूल डू इज़ यू विल सॉर्ट ये वाला वेक्टर, तुमने ये वाला जो वेक्टर बनाया, इफ़ यूल सॉर्ट दिस नाउ व्हाट यूल गेट इज़ तुम्हारा पूरा जो ट्रीज़ है वो हाइट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएंगे. एंड ऑब्वियस है कि उन्होंने बोला है कि तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में विजिट करना है ट्रीज़ को. सो सॉर्टिंग दिस विल ऑलवेज टेल यू कि किस ऑर्डर में ट्रीज़ विजिट होने चाहिए. ठीक है. तो सपोज़ यू तो लाइक तुम्हारे पास यहाँ पे है ऐसा कुछ देर इज़ 6, देर इज़ अ हाइट ऑफ लाइक देर इज़ अ ट्री ऑफ हाइट 6 एट इंडेक्स 0,1, then there is a tree of height 8 at 1,1. ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास ये strictly increasing order में you have this particular array maintained with you and तुम्हें eventually end तक पहुँचना है. So how do you do this? So you will have two things always. So what we'll do is पहले हम निकालेंगे 6 to 8 जाने में what's the minimum time. What's the minimum time required to go from 6 to 8 and how you'll do this? This is simple. Like you can apply a BFS or a DFS. So you have two things. You have the source coordinates, you have the destination coordinates. And तुम्हें पता है कि एक नोड से दूसरे नोड जाने का कोऑर्डिनेशन क्या है कि ये like what's the like what all checks you have to do so that you can go from one coordinate to another. That is, it shouldn't be visited, it should be greater than this particular cell का value एंड ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं होना चाहिए, सेल का वैल्यू होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसका वैल्यू. दैट्स ऑल. ये थोड़े चेक्स करना है एंड ये ग्रिड के अंदर होना चाहिए. वंस ऑल दीज चेक्स आर सेटिस्फाइड यू कैन सिंपली रन अ बी एफ एस या डी एफ एस वॉट एवर यू वॉन्ट. तो यू विल गेट कि 6 to 8 तक जाने का मिनिमम लाइक व्हाट्स द मिनिमम टाइम. सिमिलरली यू विल कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी एडजेसेंट नोड बिकॉज अगर तुम्हें 6 to 8 का टाइम मिल गया, सपोज 3 आया, सो नाउ यू विल अज्यूम दैट यू आर एट दिस पर्टिकुलर नोड एंड वहाँ से ले लो जैसे 9 2,2 जाने में कि लाइक व्हाट्स दी बेस्ट टाइम. सपोज यू गेट 4. सिमिलरली करते करते सपोज ये एंड में आ गया, यहाँ पे एक नोड था 10 एट 3,3 विच इज़ योर सपोज 4x4 का ग्रिड था, तो पता चलेगा यहाँ पे 5 टाइम लग रहा है. सो योर फाइनल आंसर वुड बी 3 + 4 + 5. सो calculate the time required to go from one node to the adjacent node and initially तो यहाँ पे 0 0 0 ही रहेगा क्योंकि तुम initially 0,0 पे हो and you can take this as 0 because ये कहीं consider नहीं होने वाला है. And then you will calculate कि कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में and you will just add it to your final answer. If any of these transitions return you the time as -1, मतलब you cannot go from this particular transition to this transition, means तुम्हें पूरा break करके everything break करके you'll have to return a -1. दैट्स ऑल. लाइक फिर कुछ खास नहीं है. सो इफ़ यू सी यू हैव लाइक मैंने वो ग्रिड को पूरा फ्लैटन कर दिया है. सो व्हाट आई डिड इज़ इफ़ द वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट आई जे इज़ ग्रेटर देन 1 आई पुश इनटू माय ग्रिड फॉरेस्ट आई जे कॉमा आई कॉमा जे एंड देन ये 0,0 क्योंकि ये तो फर्स्ट जहाँ पे हम करेंटली है ये उसका वैल्यू और ये फर्स्ट रहना चाहिए, दैट्स वाई 0 डाल दिया बट वो फ़र्क नहीं पड़ता. एंड देन तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया. देन फॉर एवरी एडजेसेंट ट्रांजिशन, फॉर एवरी एडजेसेंट एज I will get the source, then I want to traverse to the node adjacent to me in the flat grid, that is I plus 1, and second dot first and second is basically ये जो हमने ऐड किया था. And then I'll simply calculate कि for that source and that destination what's the minimum time I require. एक बार and that is simple BFS. वही मैंने क्यू में उसको पुश कर दिया and these are levels. Basically BFS में we are like I use BFS, so I am maintaining levels कि तो जब मैं अपने चारों like all 4 directions I visit
एंड देन आई चेक कि फर्स्ट ये सारे कंस्ट्रेंट्स की वो ग्रिड के अंदर है, वो विजिटेड नहीं है एंड उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं है. I will mark the visited as true and I will push into my queue level plus 1. I'll push into my queue level plus 1 and as soon as तुम queue से कुछ pop करते हो and तुम्हें वो जो तुम्हारा destination था तुम्हें वो मिल जाता है, you can just simply return that current level, like किस level पे वो तुम्हें मिला है, because every time we are pushing something into our queue we are adding a level into it. And eventually if you don't find anything, we have initialized our answer with -1, you will get a -1 as your answer. And if you get a -1 as your answer, you will return a -1, otherwise you will do, like you will add the result to your answer जो BFS ने तुम्हें shortest path का result दिया था. ठीक है, that's all. I'm not explaining BFS यहाँ पे क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, same queue method. क्यू में पुश इट देन यू पॉप इट, तुम उसके चारों एडजेसेंट नोड्स में जाते हो, लाइक जहाँ पे यू कैन विजिट, यू विल चेक इफ़ यू कैन विजिट दैट एंड इट्स नॉट ऑलरेडी विजिटेड एंड द वैल्यू इज़ नॉन जीरो, देन यू विल मार्क द विजिटेड एज ट्रू फॉर दैट न्यू नोड, यू विल पुश दैट इनटू द क्यू एंड सिमिलरली द होल प्रोसेस अगेन, एंड एज सून एज यू फाइंड योर डेस्टिनेशन यू विल रिटर्न द करंट लेवल. ठीक है, एंड इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स नॉट दैट मच. फ्लैट ग्रिड में मैक्सिमम साइज वुड बी 2500 and again BFS would take maximum of 2500, so 2500 2500 that's feasible, right? So n raised to 4 का लग रहा है almost, but that is allowed for this constraint. ठीक है, that's all. कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ लेना. बाय बाय.